India's X factor is probably Virat Kohli. Virat Kohli is the best run chaser in the history of one-day cricket in particular. Virat, yeah, he's one of the players of our generation. As a chaser, perhaps the best batter in the history of ODI format. Virat's aggression is something that, I mean, he thrives off. You know, he's a superman. Because he's got such a good technique, he can really prove that he's the best. Virat Kohli, for me, is absolutely the best chaser that's ever been in the game of cricket. He is what he is off the field, on the field. विराट को एक चीज पसंद है, चेस करना. लाखों करोड़ों की इस भीड़ में आसान नहीं होता अपनी पहचान बनाना, लेकिन कोहली का खुमार ऐसा जो लोगों के दिल और दिमाग पर हावी है। मौजूदा दौर में क्रिकेट की पहचान बन गए हैं कोहली। ये हैं क्रिकेट के ग्लोबल आइकन। वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली ने लोकप्रियता के नए आयाम गढ़े हैं और इस पूरे सफर में उन्होंने हमेशा क्रिकेट से प्यार करने वालों को रोमांचित किया है। I would have no argument in saying Virat is to cricket what LeBron James is to basketball and beyond the sports, Ronaldo and Messi. Obviously, soccer and basketball perhaps have a wider global following than cricket, but if you calculate the numbers at home in India, on the subcontinent, the exposure that Virat has gotten in cricket, he is that guy. And it's just the marriage of technology, a lot of social media, a lot of traditional media that has sort of cast Virat in that spotlight. And when you take into consideration the entire context, to me, the GOAT of one-day cricket batting, his ability to accumulate runs in T20 cricket, and for quite a while, his average in Test cricket was over 50. All of that combined has allowed Virat to be the superstar that he has become. He's the most important cricketer in the world as far as the face of cricket is concerned, because we have seen how he was the brand ambassador of Test cricket, because he wanted to make Test cricket interesting, and that is why he started playing aggressive cricket when he was captain. And he, as I said earlier, that he wanted to make sure that there are no dull draws. He wanted to win, or sometimes by doing that, he was okay to lose the game as well. I think that's the kind of swag people liked it as well, and that is why we all called him brand ambassador of Test cricket. And when you have a guy like that, at the time, जब वो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म होने के कगार पे, कई लोग ऐसा सोचते हैं, वहाँ पे आपको एक खिलाड़ी अपने दम पे सबकी नज़र टेस्ट क्रिकेट पे अलग तरीके से करवाता है. सो आई थिंक वो फ़र्क पड़ जाता है, और इसी वजह से जो क्रिकेट के फॉलोअर्स नहीं होने के बावजूद भी जो फैंस हैं दूसरे स्पोर्ट्स के, वो आपको नोटिस करने लगते हैं. और क्यों ना करें, उस तरीके की ब्रांड अपने आप को बनाया है विराट कोहली ने, और हम सबको गर्व है इस बात का कि वो एक महान इंडियन खिलाड़ी है. सोशल मीडिया में विराट के फॉलोअर्स की तादाद बहुत तगड़ी है। वहाँ उनकी हर बात का वजन है, हर अदा पर दुनिया फिदा है। सोशल मीडिया में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के बाद कोहली तीसरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं। दुनिया की कई बड़ी लीग और स्पोर्ट्स के सितारे विराट की इस दीवानगी के आगे कहीं नहीं ठहरते। फेमस स्पेनिश डेली मार्का ने हाल ही में पब्लिश अपने एक आर्टिकल में बताया कि कोहली की गिनती सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट्स में होती है। इस मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और मेसी टॉप 3 में हैं। किंग कोहली 5वें नंबर पर। दिग्गज टेनिस स्टार और F1 सितारों से बहुत आगे भारत के कोहली हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दिग्गजों की सूची में नजर आने वाले वो एकमात्र क्रिकेटर हैं। India is now, cricketing powerhouse. Whatever India does gets amplified around the world. And Virat Kohli is one of your top performers, one of your top stars, brands. And the thing is, there is a huge Indian cricket market, but the Indian team, the product, Indian cricket is also, very good at this stage. It's not just about India being a financial powerhouse, it's also a powerhouse on the field. And Virat Kohli is the flag bearer. I'm a massive fan of Virat Kohli, of course. And I was the first one to say that if there was one player that you always put on a list of, get him out quick. The one player I've always said that would get close to Sachin Tendulkar's records, that's going to be him. I mean, not to mention the other guys, but the why is that he has this impact on a game that most players don't have, and he can make magic out of nothing
than most players cannot do. साल 2019 में विराट कोहली प्रतिष्ठित ESPN वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट में 7वें नंबर पर थे। सोचिए, टेनिस स्टार राफेल नडाल, बास्केटबॉल स्टार स्टीव करी और गोल्फर टाइगर वुड से भी आगे हैं किंग कोहली। 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है ग्लोबल लेवल पर। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कोहली की अपार लोकप्रियता को। जी हां, रॉजर फेडरर, फुटबॉलर हैरी केन और टोनी क्रूज जैसी नामचीन हस्तियां भी इनकी कायल हैं। Yeah, I mean, it started, I think I put a tweet out, it must have been 5-6 years ago now, just saying kind of my admiration of Virat in one of the games that he played. And then he kind of contacted me on Twitter after that, and we kind of started talking on social media, and then we kind of exchanged numbers, and then he was down in London for a series, I think, and we managed to catch up and meet. So maybe how he bats so good, maybe how he becomes such a good batsman. Yeah, he's incredible to watch, real down-to-earth guy, but yeah, he has a real fire in his belly and passion when you watch him play, which is great to see. किंग कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को हाल ही में प्रतिष्ठित FA कप फाइनल देखने का न्योता मिला, जिसमें मैनचेस्टर सिटी फाइनल खेल रही थी। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी कोहली की विराट लोकप्रियता का डंका बजता है। I have to say though that Virat Kohli is my favorite cricket player of all time. Of all the cricket players, he is definitely the most expressive and the most passionate. He's like the Michael Jordan of cricket. He is. Oh, he is. Finally, cricket fan. क्रिकेट अभी भी दुनिया में अपनी पैठ बनाने की जुगत में है, लेकिन कोहली की पॉपुलैरिटी वहाँ सेट है। Biggest cricket player in the world, Kohli. Look how many followers he got compared to LeBron. Okay, let me guess. I'm gonna say Kohli 95 million. Okay, let's go. Yeah, here we go. 214. Now what does LeBron got? Holy shit. King James. That's it. Got more than LeBron. एक तरफ सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स तो दूसरी तरफ वो दीवाने जिनके लिए कोहली की एक झलक के सामने 7 समंदर की दूरी भी कोई मायने नहीं रखती। जब विरोधी खेमे में भी कोहली का क्रेज हो तो समझ जाइए ये असाधारण है। ये हासिल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपके सामने विराट कोहली का नाम लिया जाए तो पहला लफ्ज क्या आएगा? आला, कमाल, मतलब आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली विराट कोहली। क्यों? उसका आप पर्सनालिटी देखें, पर्सनालिटी है, ग्रूम्ड है, अच्छा है। विराट कोहली, अभी आपको मैंने बताया, इज सो चीजी। Indian cricket team has विराट कोहली। बात अपनी जगह, लेकिन डैशिंग अगर देखा जाए तो विराट कोहली है, उसका एक अपना स्टाइल है। कोहली है। खेल की दुनिया और वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली का सफर इनक्रेडिबल है। ग्लोबल स्टारडम की चाहत तो बहुतों को होती है, लेकिन इसे कमाना इतना आसान नहीं होता। जिन देशों में लोग क्रिकेट का भी नहीं जानते, वहाँ भी लोग विराट को जानते हैं। ग्लोबल होते क्रिकेट का चेहरा बन चुके हैं विराट।